Hello student. Now we are going to discuss recessive epistasis. Recessive epistasis, the ratio is 9:3:4. Name is recessive means name itself indicates that epistatic genes are recessive in condition. So epistasis due to recessive gene is known as recessive epistasis. In the last clip we have seen that डोमिनेंट एपिस्टेसिस. तो एपिस्टेसिस करने वाला जीन डोमिनेंट था. डोमिनेंट जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन ऑफ अनदर लोकेशन. हियर recessive gene at one locus, that recessive gene is here in this condition small a. It masks or suppresses the activity of dominant gene capital B or कैपिटल बी स्मॉल बी ऑफ अनदर लोकेशन. तो दो जीन्स हैं ए और बी. तो रेसेसिव कंडीशन में जब ए होता है, ये दो अलील रेसेसिव कंडीशन में होते हैं, तब पिगमेंटेशन माइस के अंदर नहीं होता है. ये एपिस्टैटिक करता है बी ब्लैक कलर को. सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द थ्री टाइप्स ऑफ माइस generally or commonly occurs. The common house mice occurs in three colors, that is one agouti, black and albino. This color is agouti color, this is a black color, black color mice, and this is albino, completely white colored mice. So ये इनका जो skin है, that is called skin or coat. This coat color is agouti. Why this is a wild type. Generally most of the mice occur in this color. This is called wild type of color. ये ऐसा कलर क्यों है? Why this is? Because of the hairs. These hairs contain three types of bands. One, this gray color band near to the skin. Then yellow color band, and top में black color और brown color band. तीन band में इनके hairs होते हैं. That's why these mice get this color. This color is called agouti. This mice is black. All the hairs are black. Ventral side is a white, but dorsal side it is a completely black. These mice also ventral side it is a white, because of the ventral side white color hairs are there. And this mice is completely white or albino. It is called albino. This color is because of no pigmentation, no color pigmentation, and no color pigmentation is because of small a. These two alleles, whenever there is a presence of these two alleles, there will be no pigmentation. This suppresses the activity of this black. ये इसको मास्क कर जाता है. स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी को मास्क कर जाता है, इसलिए इसमें पिगमेंटेशन आ नहीं सकता. So this we are going to discuss. Again these are few important lines. In mice, albino mice, white coat color वाला जो mice है, this color white coat is produced because of recessive gene small a. Just now we have seen same thing. Albinism, no color pigmentation or white coat of skin is because of recessive gene small a. This we have to remember always. अब दूसरा जीन पेयर बचा है दूसरे लोकेशन में, वो है बी. अब ये जो बी है, दिस बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कलर पिगमेंटेशन. दो तरह का एक्सप्रेशन दे सकता है ये जब डोमिनेंट स्टेट में होता है बी. डोमिनेंट स्टेट में कैपिटल बी बोथ अलील्स इन कैपिटल कंडीशन मीन्स डोमिनेंट कंडीशन, और वन कैपिटल बी वन स्मॉल बी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव. Whenever this another gene is present in this condition, it produces gray color, gray coat color. एंड जब ये बी जीन रेसेसिव कंडीशन में होता है, मतलब दोनों अलील स्मॉल बी होते हैं, देन दैट कलर ऑफ माइस विल बी ब्लैक. This condition produces black coat color. So here you have to remember this. Small a, that is white coat.
albinism. Capital B grey color, both small b black color. So इसका मतलब ये हुआ कि small a is epistatic to capital B. The recessive condition वाला जो small a है, that is epistatic to agouti gene and black color gene. The recessive gene for albinism AA small a is found to be epistatic to gene for agouti capital B or capital B small b, as well as homozygous alleles for black small b. Now experiment. This experiment में example which we are going to discuss. There is a cross between homozygous agouti color mice and homozygous albino mice. ये दोनों का क्रॉस किया है. So we discuss this first. Here in parent generation, these are the two parent mice. One homozygous agouti, capital A, capital B. Homozygous albino, small a, small b. इनके gametes कैसे बनेंगे? Which are the gametes for this? Only one type of gametes will be there, capital A, capital B. In this case, only again one type of gamete, small a, small b. When these two parents get crossed, all these individuals of F1 generation, they will be of agouti color, having the genotype this. What is the genotype? Capital A, small a, capital B, small b. This is a agouti color genotype. Now, when we cross both two individuals of this agouti color, for F2 क्रॉस के लिए हम जब इनको क्रॉस करेंगे तो हमें ये चार्ट मिलेगा. तो ये जो इंडिविजुअल है, इसका गैमेटोजेनेसिस अगर करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस कैसे बनेगा? A and B, कैपिटल A, कैपिटल B. The capital A, small b. Here the capital A, small b. Small a, capital B. Small a, capital B. Small a, small b. Small a, small b. Means 4 types of gametes are formed. Here also, this parent also produces same 4 types of gametes. So male gametes I have written here and female gametes I have written here. Now go on crossing this. Capital A, capital A, capital B, capital B. All are capital, all are dominant, so color is agouti. Again capital A, capital A, capital B and small b. Agouti color. Why agouti color? Because capital B is there and capital A is there. Whenever जहाँ आप capital A और capital B देखोगे, there you will get agouti color. यहाँ capital A, capital B है, यहाँ capital A, capital B है, यहाँ पे भी है. Here also capital A, capital B, capital A, capital B. In this condition also, in this condition, here also, here also. So these are 9 where the capital A and capital B is present. That's why this agouti color. Now look, this black, 3 black. Why these 3 are black? Because जो पिगमेंट वाला जीन जो है, पिगमेंट वाला ए जीन, वो डोमिनेंट कंडीशन में है. कैपिटल ए. हियर only one is there but in dominant condition, capital A. Here also one is there but in capital condition. जब ये कैपिटल A होता है और कैपिटल B नहीं होता है तो ब्लैक प्रोड्यूस होता है, ब्लैक माइस. सो हियर 1, 2 and 3 black color mice and this the last albino. यहाँ कैपिटल A नहीं है, कैपिटल A, small a, here also small a, recessive, here also recessive condition, here also recessive condition. These 4
are recessive condition. Though there is a black capital B, here also capital B, here also capital B, but since this is a epistatic alleles, it prevents the production of pigment, and since there is no pigment, the black color or brown color or that agouti color is not produced. That's why this small a, this allele, they are called epistatic to B, means black color. A, recessive AA is epistatic to B. Here the sentence is important. The presence of dominant alleles of the epistatic gene AA. एपिस्टैटिक जीन कौन सा है? ए है, मतलब स्मॉल ए एपिस्टैटिक है. जहाँ जहाँ एपिस्टैटिक जीन का कैपिटल है, मतलब दिस कैपिटल ए, इट अलाउज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बी. कैपिटल ए होना मतलब बी को अलाउ करना, बी को एक्सप्रेस होने के लिए अलाउ करना, एंड देन इट प्रोड्यूसेस अगोती कलर और ब्लैक कलर. अगर ये कंडीशन है तो अगोती कलर प्रोड्यूस होगा, या स्मॉल बी है तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा. सो इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील ऑफ ए, डोमिनेंट अलील एपिस्टैटिक ए, एपिस्टैटिक जीन का डोमिनेंट कंडीशन, डोमिनेंट अलील अगर है तो इट अलाउज टू एक्सप्रेस द जीन बी. एंड कोट कलर, दिस टू टाइप्स ऑफ कोट कलर्स आर फॉर्म, आइदर ब्लैक अगुती और ब्लैक. बट जब ये एपिस्टैटिक जीन रेसेसिव कंडीशन में होता है, देन इट डज नॉट अलाउ टू एक्सप्रेस द बी एंड इट प्रोड्यूसेस अल्बिनो रैट्स, अल्बिनो माइस. सो दिस इज ऑल अबाउट रेसेसिव एपिस्टेसिस, इन विच क्लासिकल जो रेशियो होता है 9:3:3:1, दैट इज मॉडिफाइड इंटू 9:3:4. डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमने देखा था रेशियो 12:3:1. इन रेसेसिव एपिस्टेसिस में है रेशियो 9:3:4. So here dominant epistasis and recessive epistasis both we have finished. Both are exam point of important. Thank you.